हेलो एवरीवन। इससे पहले प्रीवियस की क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वो टॉपिक आपको पता है। वहाँ पे भी एक्सेस प्रेशर इनसाइड जो था वो इनफैक्ट एक्सेस प्रेशर इनसाइड एयर बबल इन अ लिक्विड हमने लिया था। लेकिन उसके बाद जो दूसरा टर्म्स है हमारे पास एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल। और यहाँ पे आप देख सक रहे हो, यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमने क्या किया है, कंसीडर किया है एक सोप बबल, है ना, जिसकी रेडियस आर है और जो इसकी सरफेस टेंशन है इस सोप सॉल्यूशन की उसको मैंने T कंसीडर किया है। साथ साथ प्रेशर इसकी जो है एक तरफ P1 है और एक तरफ P2 है। ठीक है, तो इस डायग्राम में यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे जो आप जैसा दिख रहा है आपको, ये देखो एक तरफ इसका प्रेशर P1 है, दूसरी तरफ इसका जो प्रेशर है वो P2 है। इसकी जो सरफेस टेंशन है वो यहाँ पे आप देख सक रहे हो, यहाँ पे इस जगह पे मैंने सरफेस टेंशन को T लिया हुआ है और रेडियस जो है वो आपको पता है कि इसका R है। तो अब इसको कैसे हमें इसके लिए एक्सेस प्रेशर निकालना है वो हम कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यू हैव टू, इन ऑर्डर टू फाइंड द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल, वी कंसीडर the faces acting on one half, this one is B of the bubble which is shown in figure। ये एक हाफ पोर्शन आप इसको यहाँ पे पहले कंसीडर कर रहे हो इस सोप फिल्म को, ये हाफ पोर्शन B जिसका नाम आपने दे दिया है। A soap bubble has two liquid surfaces in contact with air। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कि a soap bubble has two liquid surfaces in contact with air, one inside the bubble and the other outside the bubble। तो दो तरह के सरफेसेस हैं। इस तरह से यहाँ पे जो हाफ बी जो सरफेस है सोप बबल का, इस पे जो सरफेस टेंशन लगेगा वो क्या लगेगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं फोर्स ऑन वन हाफ B, this is B of the soap bubble due to surface tension यहाँ पे, this one is 2 pi r t, but this 2 pi r t must be multiplied by 2 times। Why? Because there are two surfaces inside the bubble, this one is one surface and other is outside the bubble which is the other surface, that's why we multiply by this one by 2, so it will becomes 4 pi r t। And the various forces acting on the hemisphere, in which force 1 is force due to surface tension, which is equal to 4 pi RT, and second force is force due to outside pressure, which is equal to outside pressure P1, this will be P1 into pi r square, and next third force is
force due to inside pressure. This one is outside, but next one is force due to inside pressure, which is P2, and this one P2 into pi r square. Force due to surface tension, which is 4 pi RT, acting towards the right side, and you can see this one in your diagram. Force due to this one, this is 4 pi RT in right side, okay, and there will be 4 pi RT. This force is acting on right side, and next one force, this will be 4 pi RT, and next force which is towards also right side, which is P1 into pi r square. So P1 into pi r square, this is also acting towards right side. As you can see here, the direction of P1 is shown in this figure, and this arrow mark shows the direction of right side, while P2, force due to inside pressure P2, this one towards left side, this P2, and this P2 towards left side. This one is the inside pressure applied by the force. And in equilibrium position, as the hemisphere B, this hemisphere, this portion hemisphere is B, is in equilibrium under the action of these three forces. So we can apply the condition of equilibrium here. At first we are going to write here कि as the hemisphere B, so this will be under the action of these three forces. This will be P2 pi r square is equal to 4 pi r into t plus P1 pi r square, and the pi r square, if you take common from these two parts, you can write here P2 minus P1, which is equal to 4 pi r t, and excess pressure will be P2 minus P1. Finally you get 4t by r. Thus pressure inside the soap bubble, जो pressure होगा soap bubble के अंदर, is greater than pressure outside by an amount 4t by r. That's why this is the formula. You got this formula, P2 minus P1 is equal to 4t by r. And smaller the soap bubble, that means the radius, as radius will be smaller, the greater is the excess pressure. This is the excess pressure. This one will be maximum, or will be increase accordingly to the reversibility process of the radius of the bubble.